Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, I am Piyu and today I am going to take through my morning routine from the moment I wake up. I will be showing all my tips and tricks for staying productive, feeling balanced and having a healthy lifestyle. So grab a coffee, sit back and let's get started. Mornings are my sacred time to set the tone for the rest of the day. I like to waking up around 5 am to 6 am to give myself some sweet moments before the world wakes up. I always make sure to get out of the bed within 5 minutes of waking up. This helps me avoid the sleepy feeling and prevents me from hitting snooze repeatedly. सुबह उठने के बाद बेड पर ही बैठकर आज के दिन के लिए भगवान को थैंक यू बोलती हूँ और एक अच्छी सी स्माइल के साथ दिन की शुरुआत करती हूँ। सो अब विंटर्स आ गए हैं तो सभी लोग अपनी जैकेट, जर्किंग, स्वेटर्स वगैरह निकाल लो। मुझे तो पर्सनली विंटर्स बहुत पसंद है। धरती पर पैर रखने से पहले धरती माँ के पैर छूना ये अब मैंने आदत लगा ली है। Then I start by making my bed. It's such a small task but it really helps me feel productive and organized from the get to go. We all know that brushing and flossing are important, but did you know that poor oral hygiene can lead to more than just a cavities? It's true, neglecting your oral health can lead to gum disease, bad breath, tooth loss, and even impact your heart health. Make sure to brush all surface of each tooth, the outside, the inside, and the chewing surface, and don't forget your tongue. Bacteria can build up there too. As you step onto the terrace, take a deep breath in. Feel the fresh air fills your lungs, gently awakening your body and mind. Pause for the moment to simply be here. In this space, there is no rush, no deadlines. There is only this moment and you are here to enjoy it fully. Now take a moment to observe everything around you. Everything here in this moment is a reminder of the beauty of life, the gentle flow of nature, the calm rhythm of the world moving around you, and in this space, you are a part of it all. If you are sitting, feel the ground beneath you, whether it's cool surface of the terrace or the warmth of the floor. Imagine yourself grounded in this moment, like the roots of the tree extending deep into the earth. With each breath, feels your body connecting to the earth below, steady and strong. Allow your mind to settle and bring your awareness to the present. Whatever happened earlier today, whatever may happen tomorrow, right now you are here in this moment, experiencing the calm of the air, the stillness around you. You are enough exactly as you are in this moment. Take this time to just be. After that घर का कुछ काम करना पड़ता है, नहीं तो मम्मी डांटेगी. I always drink a glass of water in the morning. आजकल मैं तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पी रही हूँ. It helps to improve the digestion and many more. Next, I love doing some light exercise. Nothing too intense. Usually I will go for the 10 to 15 minute stretch or do a short yoga session. This helps wake up my muscles and get the blood flowing. So आज मैंने 15 सेट्स किए सूर्य नमस्कार के. सूर्य नमस्कार engages nearly every muscle group in the body, providing a full body workout. It combines strength, flexibility and endurance, making it an excellent exercise for toning and strengthening. Surya Namaskar helps to increase the flexibility of the spine, hips, shoulder and legs. Regular practice gently stretches and lengthens muscles which can improve flexibility over time. The movement of Surya Namaskar enhances blood flow and improves the circulation throughout the body. The flow of the blood through various parts of the body helps in flushing out toxins.
आफ्टर द योगा सेशन कुछ ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ जो मुझे इंस्टेंट एनर्जी देने में हेल्प करती है। द नेचुरल शुगर इन द ड्राई फ्रूट्स आर इजीली डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड। उसके बाद पौधों को पानी देना इज़ कंपलसरी। प्लांट्स को हाइड्रेट करने के बाद खुद को बूस्ट करना भी ज़रूरी है, इसलिए लेमन वाटर बना रही हूँ। इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट मिक्स करके इसको कंज्यूम करती हूँ। आप हनी भी इसमें मिक्स कर सकते हो। लेमन वाटर इज़ रिच इन द विटामिन सी, अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट दैट हेल्प्स अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम, helps strengthens the immune system, protecting against cold, infection and illness. Lemon water is an incredibly simple and effective way to kickstart your day and enjoy a wide range of health benefits, from boosting immunity and digestion to promoting clear skin and detoxifying the body. Creating and maintaining a to-do list can be incredibly effective tool for the boosting productivity, reducing stress and improve time management. उसके बाद अच्छा सा हॉट वाटर शावर लेती हूँ। अच्छा सा शॉवर लेने के बाद स्किन केयर तो मस्ट है। बॉडी को हाइड्रेट एंड सॉफ्ट रखने के लिए बॉडी लोशन, फेस के लिए सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन एंड गुड स्मेल के लिए एक अच्छा सा परफ्यूम। तो चलिए मैं अपना स्किन केयर करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। स्किन केयर करने के बाद खाने से पहले भगवान की पूजा कर लेती हूँ। भगवान ने ये जो हमें सुंदर सी लाइफ दी है उसके लिए थैंक यू बोलना तो बनता है। थैंक यू फॉर दिस डे, फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ एंड फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, लव एंड सर्व। भगवान के पास जो बैठकर शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। इस टाइम तक तो मुझे अच्छी खासी भूख लग जाती है क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करती नहीं हूँ ज़्यादातर। मम्मी ने लंच बना कर रखा है, चलो इसको एक खाती हूँ और बाद में मिलती हूँ। दोपहर में नींद आ रही थी तो आधा कप अपने लिए कॉफ़ी बनाई विदाउट मिल्क।
कॉफ़ी के साथ साथ मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक रीड की. In the introduction, Morgan Housel explained that the psychology of money is not a typical personal finance book that focuses on how to make money. Rather, it explores how people think about money, how emotions and biases influence financial decisions, and why we often make irrational choices regarding money. Financial success is not just about knowledge of market, investing, or money management. It's often more about behavior, mindset, and emotional control. तो सभी को एक बार ये बुक तो पढ़नी ही चाहिए. And that's it. That's a morning in my life. I hope this gave you some ideas or inspiration to make your own routine a little more intentional. If you like this video, make sure a like, comment and subscribe for more content like this. And as always, leave me a comment below with your favorite part of your daily routine. See you next time. Bye bye guys.